Students, I am Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. Yesterday we were discussing the chapter classification of matter, chemistry. This is the chemistry first chapter for class 7th. And the second part of classification of matter is uploaded today. Please like and subscribe the channel for the notification of the videos. Now, based on the arrangement of molecules, we classify the matter in 3 states, right? Solid, liquid and gases. Today we will discuss the classification of matter based on the composition. Classification of matter based on composition. Based on the composition of the matter, it is classified into 2 parts. One is pure substance, another one is the mixture. Pure substance, if the matter consists of molecules having of the same substance, then it is known as pure substance. Or we can say, it is said that matter is made up of identical molecules. Right? Then that matter is known as pure substance. If the matter is made up of different molecules, then it is known as mixture. Matter is made up of different molecules. Then it is known as mixtures. What is molecule? As I already told you in yesterday's lecture, that molecule is the smallest unit which exists independently and exhibit all the property of the substance and retain all the property of the substance. But molecule is not the tiniest unit of the matter. Molecule is made up of atoms. Molecules is made up of atoms, and atom is the tiniest unit of the matter. But atom may or may not exist independently. In some cases, atom exists independently. In some substances, atom exists independently, but in some substance, atom does not exist independently. For example, the substance in which atom exists independently are neon, argon, xenon, krypton, helium, right? In these substances, atoms exist independently. So these are all gases, right? That's why they are known as noble gases. They are known as noble gases. In this, atoms exist independently. But many of the substances most of the substances are there in which atom does not exist independently. So what if question is asked that name the smallest unit of the matter which exists independently, right? So in that case, if option molecule is available, then you have to answer the molecule, because atom may or may not exist independently. Atom exists independently only in this case, in these substances. That's why they are known as noble gases, right? In case now the pure substance. In pure substance, as I said, matter is made up of identical molecules. It is classified into further 2 parts. One is elements and second one is compound. Elements. What is element? Element is when the molecule
element is when the molecule of the substance, we can say molecule of the substance is made up of identical atoms, then we can say that is the element, right? In case of compound, when the molecule of the substance is made up of different atoms, then they are said to be compound. Further, the elements are further classified into three parts. First one is the metal, second one is the non-metal, third one is the metalloids. Metalloids are the, you can say, in between the properties of metalloids are exhibits between metals and non-metals. It means that metalloids, some properties of metalloids are matched with the metals and some properties of metalloids are matched with the non-metals. That we discuss later on in this lecture. Now, the second one classification of metal is mixture. In mixture, matter is made up of different molecules, but the ratio may not be fixed. That we will discuss later on in this chapter. And mixture is classified further into two parts: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now, the very first topic of the chapter, after this classification, we will discuss in detail now the elements. What is elements? Elements, I said that molecule of the substance is made up of identical atoms. Like if we say hydrogen is an element. Independently, hydrogen is an element in which all molecule consist of only the hydrogen atom. But if we talk about the प्योर सॉल्ट, प्योर एलिमेंट सब्सटेंस की बात की जाए, प्योर सब्सटेंस, ऑल आर प्योर सब्सटेंस. इफ वी टॉक अबाउट वाटर, वाटर इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस. Water is also a pure substance. The table salt which you use in your house, it is also a pure substance. But its scientific formula is sodium chloride, that is NaCl. And next is, if we say oxygen is also a pure, but difference is if we say what is element and what is compound, then water का chemical formula हमारे पास क्या होता है? H2O. Molecule is made up of two different kinds of atoms, that is hydrogen and oxygen. That's why it is a compound, we can say. And NaCl, one molecule is made up of NaCl consists of one atom of Na plus one atom of Cl. In this, one molecule consists of two different types of atoms. That's why it is known as compound. In a fixed proportion. ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं इसको लिख दूँ NaCl2, that is not a compound because ये fixed proportion नहीं है. NaCl जो है कंपाउंड में क्या होता है कि दो एटम्स जो भी हमारे कंबाइंड होते हैं, दे आर केमिकली कनेक्टेड एंड केमिकली कनेक्टेड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में कनेक्टेड है, मीन्स एक एटम Na का है तो एक एटम ही Cl का आएगा, तभी वो NaCl बनेगा. ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा? वो कंपाउंड बनेगा फिक्स प्रोपोर्शन में जब मैं उसको मिक्स करती हूँ या केमिकली वो रिएक्ट करते हैं. अगर वो फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि एक मैं लगाऊँ मड के अंदर मैंने सैंड के अंदर मैंने पानी डाल दिया, उसमें क्या है कि कोई रेशो नहीं है, एक फिक्स रेशो नहीं है. दैट्स वाई दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर. कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है कि एटम्स जो हैं वो अलग अलग तो है एक मॉलिक्यूल के अंदर, बट कंपाउंड में
उनका रेशो जो है वो फिक्स होता है, मिक्सचर के केस में वो रेशो जो है वो फिक्स नहीं होता। अब ऑक्सीजन जो है इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है, सेम एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिमेंट। यही डिफरेंस बताया था अभी कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है आइडेंटिकल एटम्स। उसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया था 2 के अंदर, एक था एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट में क्या था, एक मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, सेम काइंड ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन के अंदर क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिमेंट। वाटर जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, जबकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो क्या कंसिस्ट करता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई 2 अलग अलग तरीके के इसमें एटम्स जो हैं वो अवेलेबल है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। बट ओवरऑल इट इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। अब तुम कहोगे प्योर सब्सटेंस या हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत क्या है। हर एक सब्सटेंस जो है, जो भी हमारे अराउंड है, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे हम उसको प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर के अंदर क्लासीफाई करते हैं। इसीलिए ये जो है ये हम स्टडी कर रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। अब एलिमेंट्स को फर्दर हमने क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। बिफोर डिस्कसिंग द मेटलॉइड्स we will discuss the terms metals and the non-metals and their difference. एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, नंबर 1 इज मेटल्स, ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स पढ़ते हैं, मेटलॉइड्स बाद में, ठीक है। थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। अब यहाँ लिखते हैं मेटल्स, ये लिखते हैं नॉन मेटल्स। यहाँ लिखते हैं हम प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स में क्या है कि एलिमेंट में एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारा क्या करता है, सेम आइडेंटिकल एटम्स जो है वो कंसिस्ट करता है। अब उस एटम की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। द प्रॉपर्टीज फॉर द मेटल, सबसे पहले प्रॉपर्टीज है इसकी स्टेट। मेटल्स जो है वो ज़्यादातर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इन द सॉलिड स्टेट्स, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, दैट इज इन मोस्टली गैसियस स्टेट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मोस्टली गैसेस। अब सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट मर्करी जो थर्मामीटर के अंदर यूज होता है वो भी क्या है, एक मेटल है, बट दैट इज लिक्विड। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज मर्करी, दैट इज लिक्विड, एंड गैलियम। मर्करी एंड गैलियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, स्टिल दे आर मेटल्स। नॉन मेटल्स का होता है जो मोस्टली होती हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, बट एक्सेप्शन इज
सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, दे आर सॉलिड, while bromine is also non-metal, that is liquid, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है that is melting point and the boiling point, melting and boiling point. In case of metals, they are having very high melting and boiling point, but few exception is there. That is sodium, potassium, mercury. Have low melting and boiling point. Low melting point and boiling point. ठीक है। While गैलियम भी जो है वो एक मेटल है, हमने ऊपर पढ़ा था। गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट है बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज जब मेटल्स का लो वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो नॉन मेटल्स का क्या होगा, उसका ऑपोजिट, दैट इज वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Exception is carbon, silicon and boron. ठीक है. एक्सेप्शन का मतलब है कि इनके इन तीनों एलिमेंट्स के हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, बट स्टिल दे आर नॉन मेटल्स. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. Metals are generally hard. Solid. Non-metals are brittle. इसका एक्सेप्शन वेरी हार्ड मीन्स अगर हम एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, इनको देखेंगे तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. बट कुछ जैसे सोडियम है, पोटेशियम, दे आर नॉट हार्ड. वो हार्ड नहीं है तो वो हमारे पास किसमें आते हैं, इसके एक्सेप्शंस में. सोडियम, पोटेशियम. सॉलिड नॉन मेटल्स हमने अभी ऊपर देखा कि सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, कार्बन, ये क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पर लिखा है सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. रेस्ट गैसियस वाले जो है वो हमारे पास हार्ड हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो हमारे पास सॉफ्ट ही होते हैं. ठीक, तो एक्सेप्शंस यहाँ पर लिख दिया, सॉलिड मेटल्स, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि डायमंड, डायमंड जो है वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, ठीक है. बट डायमंड इज द हार्डेस्ट
नॉन मेटल। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पैक्ड होगा वो क्या होगा, हाईली डेंस होगा। सो मेटल्स जो है वो हमारी क्या है, सॉलिड्स फॉर्म में है, उसका स्ट्रक्चर जो है क्या ऐसा होता है, हाईली पैक्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, इसको बोलते हैं इसलिए हाईली डेंस। एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन इज lithium, sodium and potassium, lithium, sodium and potassium. Highly dense. Why? They are having low density. लो डेंसिटी है, ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि वो आसानी से जो सॉलिड फॉर्म में है दे आर ब्रिटल, कि वो आसानी से हमारे पास टूट भी जाता है। बट अभी मैंने यहाँ बताया कि एक्सेप्शन इस केस में क्या है, डायमंड है, डायमंड हार्डेस्ट है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन क्या आएगा, डायमंड। एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, देयरफॉर इट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है कि दो तरीके की कंडक्टिविटी होती है, वन इज हीट कंडक्टिविटी एंड अदर वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी का मतलब है कि वो अपने अंदर से कितनी हीट को पास कर सकता है, हीट पास कर पाता है या नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि सब्सटेंस जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ कंडक्टिविटी की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं हीट कंडक्टिविटी प्लस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों की बात कर रही हूँ। तो मेटल्स जो है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। They are not the good conductors, they are said to be the bad conductors. Bad conductors means bad conductor of heat and electricity. Exception is bismuth and tungsten. They are metals, but they are not good conductor of heat and electricity. Their exception is graphite. Graphite is also made up of carbon. Graphite क्या है, जो पेंसिल के अंदर हमारी लीड लगी होती है, ब्लैक कलर की जो लीड होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एंड gas carbon, they are good conductor of heat and electricity. Next property is luster. Do not have luster. Do not have luster. But here exception is iodine and graphite. ग्रेफाइट को कभी ध्यान से देखा है,
इट इज शाइनिंग, स्मॉल, मतलब शाइन करता है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि उसमें शाइनिंग सरफेस होता है। लस्टर मीन्स शाइनिंग सरफेस। मेटल जो है वो सारे लस्ट्रस होते हैं हमारे पास, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो लस्टर नहीं करते। उसमें दो एक्सेप्शंस है, एक है आयोडीन, सेकंड वन इज अ ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है मतलब हाउ मच इट इज कन्वर्टेड इनटू वायर, कि हम उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग पावर जो है वो हमारे पास कितनी ज़्यादा है, कि हम उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स की जो होती है वो हाई होती है, और इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वेरी लो टेंसाइल। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, बट इसका एक्सेप्शन क्या है, जिंक है। जिंक इज नॉट हैविंग एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जिंक इज हैविंग very low tensile strength, less tensile strength, and in case of metal exception is carbon. कार्बन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, that's why nowadays that carbon fiber is recently developed using the carbon. Next one is the malleability and ductility. Malleability and ductility दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, बट जनरली हम इनको कंबाइन करके ही लिखते हैं, और बुक्स में कंबाइन करके ही लिखा जाता है। Malleability and ductility। Malleability का मतलब होता है if the element is pressed with some rod and something, then can it be able to convert into the sheet। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट को बीट अप किया जाए तो वो शीट के अंदर कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, कि उस एलिमेंट को वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इन केस ऑफ मेटल्स दे आर हैविंग हाई, या फिर जनरली दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। जनरली malleable and ductile। ठीक है, ये होते हैं नॉन मैल्लेबल, they cannot be converted into the sheet, and non ductile cannot be converted into the wire। That's why जो घर के अंदर वायर्स वगैरह यूज की जाती हैं वो जनरली किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, लाइक कार्बन, एल्यूमिनियम। जनरली कार्बन को प्रेफर किया जाता है, सॉरी कॉपर को प्रेफर किया जाता है, कार्बन को नहीं, जनरली कॉपर को प्रेफर किया जाता है। वायर जो बनकर आती हैं वो किसकी होती हैं, कॉपर की भी होती हैं, एल्यूमिनियम की भी होती हैं हमारे पास जनरली। मेरी एक्सेप्शन इज जिंक, एक्सेप्शन इज जिंक। Here एक्सेप्शन इज, अभी ऊपर बताया था कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन फाइबर जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सेम एक्सेप्शन इज हियर आल्सो, कि कार्बन फाइबर जो होता है तो उसको शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टाइल भी होता है। जनरली दे आर कार्बन फाइबर इज डक्टाइल। ठीक है, दैट्स व्हाई it is having high tensile strength, and the last is occurrence। कि how it is appear in the nature। Metals are generally appeared in the form in a combined state, they are found in the combined state। found in combined states। Exceptions are
silver, gold and platinum, they are found in free states. इनको फ्री स्टेट में पाया जाता है और दैट्स वाई दीज थ्री आर नोन एज, जो थ्री मेटल्स हैं दे आर नोन एज नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स, they are found in free state. Found in free state. ठीक है. As well as in combined state. कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था नोबल गैसेज वगैरह जो भी डिस्कस की थी, नियॉन, आर्गन, जिनॉन वगैरह. और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो फाउंड होते हैं कंबाइंड, और रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट. ठीक है. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब आती है मेटालॉइड्स की बारी. अभी हमने एक यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंडक्टिविटी की. ठीक है. कंडक्टिविटी जो है वो क्या था कि मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स जो हैं दे आर बैड कंडक्टर्स. बट मेटालॉइड्स की कंडक्टिविटी जो है वो लाई करती है इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कि उनकी कंडक्टिविटी को हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत मतलब एज गुड एज दे आर मेटल्स, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स की तरफ बहुत अच्छी है. और ये भी नहीं कहा जा सकता दे आर बैड कंडक्टर्स और दे आर हैविंग द बैड कंडक्टिविटी. तो उनकी कंडक्टिविटी बीच में मेटल्स मतलब कुछ कंडक्टिविटी, कुछ जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास करते हैं. ठीक है. कुछ जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं. एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलुरियम. ये एग्जांपल्स हैं किसके? मेटलॉइड्स के. मेटलॉइड्स जो हैं उनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लाई करती है, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कंडक्टिविटी नॉट सो गुड चाहिए हो बट थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी चाहिए, तो उस केस में यूज़ किया जाता है इन मेटलॉइड्स. दे आर डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल. बट द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट. व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट? मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल of the substance is known as the atomicity. Next topic is atomicity of the element. Atomicity का मतलब क्या है? The number of molecules, the number of atoms that constitute a molecule of the element. Means एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज द एटॉमिसिटी. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इट इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक एलिमेंट. Mono means single. If one molecule of element consists of one atom, then it is known as monoatomic element. Example is copper, silver, helium. Here I am writing the symbol only.
This is the copper, Cu for copper, Ag for silver, and He for helium. Next one is diatomic element. Diatomic elements. If one molecule of element consists of two atoms, then it is known as diatomic element. Example is one molecule of element consists of two number of atoms, then it is known as diatomic element. Example is hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. Okay. Third one is polyatomic element. Polyatomic element means if the one molecule of the element consists of more than two number of atoms, then it is known as polyatomic element. Example is O3. O3 is the symbol of ozone. ठीक है. P4 मतलब phosphorus. That is known as polyatomic element. Now this is all about the elements. Now the next topic, next classification in pure substances is compounds. A compound is a mixture. A compound is a substance which is formed by the chemical combination of two or more elements. ठीक है. कंपाउंड क्या है? एक सब्सटेंस है जो फॉर्म होता है बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. दैट इज नोन एज कंपाउंड. एंड मिक्सचर इज a substance that is formed by the combination of, by simply the combination of two or more substance, two or more elements in indefinite proportion. Means उसका कोई fixed proportion नहीं है. That is the difference between compound and the mixture. This is in short form I will discuss today, but later on yesterday lecture we will cover this compound and mixture in details. This is all about the today lectures. Please like and subscribe the channel for updation of the new video, for the notification of the new video. Thank you.